Assalamu alaikum students and friends. Today, as defined in our previous session, that we will be starting a strategy session for JKAS 2022. For any exam, you have to have a proper strategy. Once you have a proper strategy, you can only then read within the lines, which is important for this examination. So let's discuss some of the few points which will be essential for your upcoming preliminary examination. As of now, you would have studied most of times that why do we need to have a strategy for examination? Because the examination pattern is completely different from your academic examination. You have to read a lot of things, but the question you have to expect that you have to expect only from 5% of your reading. That's why we need to understand what is that 5%? क्या है वो 5%? जब हमें वो 5% समझ आएगा, then your preparation becomes effective. Else it remains ineffective. That's why आप ये हमेशा हमसे ये कंप्लेंट होती है कि हमने इतना सारा पढ़ा था, हमने इतना सारा ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी, मगर पता नहीं वहाँ क्या आ गया. That is where the menace lies, and we have to arrest that menace. Once we can arrest that menace, we will be able to that's known as smart study. If we are able, then what is that? We can हर किसी चीज उसमें दो पाथ्स होते हैं. एक होती है ऐसी पाथ जहां सब जंप करते हैं, where everybody tries to jump. But does everybody succeed? No. Result is everybody does not succeed. We'll have to understand why everybody does not succeed. But another path that we will be able to traverse is that path where we have a proper strategy, where everybody does not jump, where only those persons reach who ultimately pass this examination. This is a competition in this examination is humongous. Syllabus is too vast, and reading that syllabus comprehensively with a proper theme becomes utmost necessary. That's why we have started before jumping to any topic. We know that we have a shortage of time. It's less than 45 days from now onwards, as far as the tentative calendar is concerned. But if we can utilize these 40 days with effective strategic plan, we'll be able to cover this with 10 days, almost 5 to 6 days spare. Now, what can be that strategy? Let me quote an example while defining what our strategy would be. Suppose we started with ancient history. If we start with ancient history, it would take you almost 4 to 5 months to complete only one section of a history, that's ancient history. And still after 4 or 5 months, you'll be complaining that, sir, we don't remember even a word. This is too factual. Then how to, and this is an important aspect because nowadays history is being rewritten, and ancient history becomes an important part of your examination. You can expect, because most of the questions from the culture, most of the questions come from the ancient history. Also the theme-based questions. So social aspects, political aspects, because we have a proud ancient history. Our nationalist historians, our various historians take pride in our ancient history. So this becomes very important. If you read a small subsection of ancient history, Indus Valley Civilization, it will take almost 10 to 20 days only to understand the theme of this civilization. You will not be able to remember each and every fact of this topic. Then how can we solve the question? Suppose a question comes from what are the seals? Questions comes on the seals.
Will you be able to remember each and every aspect of a seal? Definitely you will remember some portions. You will remember that we have a round seals, we have a rectangular seals, we have these square seals. Seals you will be remembering. The seals were made of common things. Common seals were made of statite, but no, previous year only the question this KS 2021 you will have seen the question asked in preliminary examination about the seals of the herbal solution was totally there was a new which the material that was given as options of his seals that was completely new to many students. From where that material was picked? It was only picked from NCERT. But when we start preparation, the first thing and foremost thing we do is start studying NCERT. Then why did most of us miss that material if it is directly mentioned in NCERT? It means the preparation, the study does not require only the completion of your topic, but needs a well-defined strategy to read between the lines. And when we start reading between the lines, we need to understand the basic theme of any topic. We need to understand the basic and the fundamental themes of Indus Valley civilization. We do not need to remember each and every fact. We know that Indus Valley civilization was an urban civilization. We will have to understand this, we'll have to process in our mind what can be the aspects of the urban valley civilization. Once you know the aspects of urban civilization, it will be easy for you to remember the most of the things which if you don't read, you will be able to solve the question. You need that the more focused, if we compare the metal, usage of metal in this industry, we know that iron is being, apart from iron, most of the metals were being used. Then why should we remember most of the metal? We need to only exclude iron. If seal is important aspect of Indus Valley civilization as far as their religious and commercial aspects is concerned, as well as their cultural aspects is concerned, we have to understand what different aspects of the seal, but we don't need to remember each and everything of this Indus Valley civilization. We need to find out those 5%. We need to understand that 5% where we can gauge that evaluate that examiner can set questions from this side. Examiner always points to that 5%. He has in his mind, उसके माइंड में हमेशा ये चीज होती है कि ये थीम्स बड़ी थीम्स है, इस थीम में से क्वेश्चन उठाना है मुझे, और अगर आपको वो थीम पता नहीं है, you will miss out. Definitely you are going to miss out after reading a lot. So this becomes important for us. Our strategy has to be devised on a component basis. We have to evaluate each and every section of our syllabus in a definite component wise. Okay, let's see what our plan would be. Most of the students amongst you as well as those studying online, most of the requirement of this examination that they should be the graduate or they should be the final year, they should be awaiting their result. Good. जब आप ग्रेजुएशन के लेवल पे आते हैं तो सब स्टूडेंट्स को ये चीज पता होती है, अगर वो कोई चीज पढ़ते हैं तो वो समझ सकते हैं, they can understand a bit. वो यहाँ से हमें ये समझ आएगा कि हमें पढ़ना है कि आप जो बेसिक स्टडीज है इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप वो पढ़ सकते हो, सब कुछ घर में ही पढ़ के ला सकते हो. हमारा क्या रोल होगा, हमारा यहाँ डिफरेंट रोल है. क्या रोल है? हम जब आप पढ़ के आएंगे we will start asking question on broad themes. हम अपने आप को क्वेश्चन करेंगे कि क्या अर्बन कल्चर में इनका मेन चीज क्या था,
इनका ब्रिक वर्क क्या है, मीन्स हम हर एक स्टेप पे क्वेश्चन करेंगे, हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कैसे करेंगे, हम जब हम टॉपिक समझाना स्टार्ट करेंगे वहाँ हम क्वेश्चन करेंगे। जब हम अपने आप को क्वेश्चन करते हैं तो आप वो डेफिनेटली वो चीज़ याद रखते हैं। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, अपने आप को टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं करेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेस्ट सीरीज, आई एम टॉकिंग व्हाइल रीडिंग, व्हाइल स्टडीइंग। व्हेन यू स्टडी तो उसी वक्त आपको टॉपिक पे देखना है कि मैं इसमें क्या क्या पढ़ूं, मुझे इसमें क्या क्या पढ़ना है। जब आप समझ सकते हो कि मुझे इसमें क्या पढ़ना है तो आपका क्वेश्चन डन है। हम आपको क्वेश्चन जब आप रीडिंग करके आएंगे, मैं आपको यही बोलूंगा कि तीन बार ये चीज आपको, ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछा, जब मैं आपको क्वेश्चन आप वहां ही समझ आएगा हमें कि हमने जो मेन कंटेंट है जहां से एग्जामिनर सवाल उठा रहा है वो हमने किया है कि नहीं। दूसरी चीज, हर चीजों को याद रखने के लिए जितना आपका पढ़ना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इज रिविजन। एंड व्हाट स्टूडेंट्स मिस हियर, दे रिवाइज आफ्टर 4 days. That should not be the case. Revision should be held, it should be done within 21 hours. Once you do your revision, once you complete your revision within 21 hours, you are on job. If you do not complete, if you do not revise within 21 hours, you are definitely going to, definitely going to way off from your mind. Mind से जाएगा। वो रिवाइज कैसे करना है? जब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक के 10 मिनट पहले यहाँ देने हैं कि मैंने कल क्या पढ़ा था, ताकि एक कंटिन्यूटी बने। जब तक हिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में कंटिन्यूटी नहीं होगी, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, आपकी जो लेवल होगी, आप यहाँ कभी यहाँ जाएंगे, कभी यहाँ जाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट को कंटिन्यूटी किससे आती है, जब आप प्रॉपर रिविजन करेंगे। और हम यहाँ एक और चीज इंट्रोड्यूस करेंगे, हम यहाँ 3 दिन या 4 दिन के बाद या संडे जो भी हमने उस दौरान उन 4-5 डेज में टॉपिक्स पढ़े होंगे उन पे हम टेस्ट सीरीज करेंगे। टेस्ट सीरीज पे जो भी स्टैटिक टेस्ट हो या डायनेमिक टेस्ट हो, उस पे हम टेस्ट सीरीज, कोई भी टेस्ट सीरीज, चाहे विजन हो, चाहे आईएएस फॉर्म की हो, चाहे जीएस को, एनी टेस्ट सीरीज, आई डोंट सजेस्ट एनी पर्टिकुलर, बिकॉज सब अच्छी है, सबने मेहनत करके बनाई है। तो उन्हीं टेस्ट सीरीज को इवैल्यूएट करेंगे हम कि हमें कितना पता था। ये जरूरी नहीं है कि हमें अगर उस टेस्ट सीरीज में कुछ नहीं आया तो हमें कुछ नहीं पता था। ये कभी नहीं हुआ है कि टेस्ट सीरीज के ही क्वेश्चन रिपीट हुए हो। ये कभी नहीं हुआ है कि टेस्ट सीरीज से के क्वेश्चन हमेशा, कि अगर आपको टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन आए तो फिर उतना ही आपके लिए काफी है, नहीं। टेस्ट सीरीज हमें थोड़ा सा ये चीज ध्यान दिलाती है, टेस्ट सीरीज हमें थोड़ा सा ये ध्यान दिलाती है कि जितना मैंने पढ़ा, क्या वो सही से मैंने पढ़ा कि नहीं, कि मेरे पढ़ने में भी वहां भी खामी रही। दिस विल हैव टू अंडरस्टैंड। वंस वी कैन डू दिस, हम अपने आप का इवैल्यूएट कर सकेंगे। ऐसे ही हम स्टेप वाइज पहले एंशिएंट हिस्ट्री से जाएंगे, फिर मेडिवल हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री में आपने कहीं देखा है कि ऑलमोस्ट देयर आर 10 to 15 क्वेश्चंस एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न प्लस कल्चर से आते हैं। और हमें क्या चाहिए, हमें 50% से स्कोर करना है। Once we are able to score 50%, उसमें से तो almost 20 question, 50% means 50 questions, तो 20 questions तो ancient, medieval, modern और culture से ही आते हैं। तो हमारे पास 30 और ही questions रहे, वहाँ से तो maximum check polity और economic आएगा, और means हमारा preliminary पास होने के काफी chances बन जाते हैं। इसीलिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक स्ट्रेटजिक प्लान बहुत ही जरूरी होता है। तो टाइम का क्रंच होने के बावजूद, डिस्पाइट हैविंग द टाइम क्रंच, वी स्टार्टेड विद द strategic plan. Else we could have straightforward started from scratch. We would have started, हम यही करते कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सारा पढ़ते, हम उसमें 20 दिन पढ़ जाते और 20 दिन के बाद हमें कुछ याद नहीं होता। नहीं, हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि हम इसको 4 ही दिन में पढ़ेंगे, मगर वो चीज पढ़ेंगे जो आपके लिए जरूरत है। बाकी जो इसका जो थीम है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने के लिए थीम है, जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी, वो आप घर में भी कर सकते हो, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल पे इतना मैच्योर होता है इंसान कि वो अंडरस्टैंड कर सकता है चीजें।
मगर क्वेश्चंस को बिटवीन द लाइंस जो क्वेश्चन जा रहा है, जो अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, हम वो यहाँ ब्रॉड बेसिक स्पेक्ट्रम में कवर करेंगे। ठीक है ना, ये हो गया एक बात। दूसरा, जहां में लूप होल रहेगा वो हम रिवाइज थ्रू रिविजन कवर अप करेंगे, और जो उसके बाद भी अगर हमारे पास कोई लूप होल होगा, विल ट्राई टू प्लग इट विद अनदर थ्रू सेट एज थ्रू टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज से हमें ये पता चलेगा कि जो हमने पढ़ा उसमें तो कहीं खामी नहीं है ना। जरूरी नहीं है आपको टेस्ट सीरीज में बहुत सारे मार्क्स आए, आपको 150 140 मार्क्स है, नहीं, जरूरी नहीं है। बिकॉज टेस्ट सीरीज एक पर्टिकुलर सोर्स से ली जाती है, तो आपने जरूरी नहीं है आपने वो पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज उसी सोर्स, आपने जो स्टडी की हो उसी सोर्स से की हो, जरूरी नहीं है। तो हम जो मेन एनसीईआरटी की थीम होगी उस पर हमारा फोकस होगा, क्योंकि थीम बेस्ड क्वेश्चन से आपका क्या होगा, आपका जो सोचने का मियार होगा वो बहुत बढ़ जाएगा। यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस थ्रू ए इनसाइट without having deep knowledge about the subject. If you can do that, you will be able to, believe me, you will be able to crack this preliminary within a short span of time. Inshallah. This would be all for today. Thank you.